Very good afternoon to you all. Hope all of you are safe, and I hope all of you are COVID free or whatever, Wuhan virus free, right? Dubai okay. Hi sir, कैसे हो आप? रुमान बहुत बढ़िया भाई. Thank you very much for asking. That is very sweet of you. Payal, Tuba, Azhar, Dr. Afreen Ansari, I'm assuming that's one of the parents' names, but good to see you. Good to see all of you. Okay, so we were getting a lot of questions in terms of what is the difference between the old pattern, new pattern, and what is actually sort of causing that kind of problem, uh, if there is a problem in the first place, right? So I thought because itni bar we faced these questions so many times, we've been students have been trying to figure out what exactly is the is the approach that one should have in terms of just sort of reading the principle and then going to the facts, or वो तो एक नॉर्मल तरीका जो है आप लोग सबको आई एम श्योर पता होगा. But I thought for today I'll also talk to you guys about what I believe is is a slightly different manner in which to sort of go about doing this passage based questions particularly, right? And I won't say it's not necessarily limited to reading comprehension in the English section, but also particularly the kind of approach you need to have for legal in the legal section when you face passage based questions and so on. And the CLAT exam now of course has only those kind of questions, right? Pranjal says, I'm looking a little different today. Joseph Stalin has come from heaven to meet me, is it? क्या बात है जोसेफ भाई, और क्या चल रहा है स्वर्ग में? Although I am forced to sort of contest whether you might have actually gone to heaven. ऐसा आप कह तो रहे कि heaven गए थे, लेकिन more likely you probably came back from hell, no? But anyway, Suvansh Yasaswini, very good afternoon to both of you. Okay, so that's what I'm going to be discussing today. What is my method? And in fact, when I used to approach passage based questions, whether it is in the context of only reading comprehension, and because मेरे time पे of course passage based legal तो नहीं आता था, but let's see what I have in store for you in terms of today's discussion, right? Okay, before that, of course, all of you know that our enrollments for a lot of these questions, a lot of these courses that you might be interested in, enrollments are still going on. For the booster crash course, enrollments are still on. For the revision course, or in dono batches mein, in both of these batches, I have a class today itself. So those of you who are still making up your mind, perhaps, right, कि करना है नहीं करना है, you of course can take a few of the demo lectures, etc., to see if that's something that you want to pursue further. आज February month का revision course में, आज February month का part 3 of all legal updates is what I am going to be discussing. Abhimanyu is continuing with his discussions on general current affairs. I focus on legal current affairs, and we're both at it in both the revision course as well as booster batch 3. Of course, for the non-CLAT examinations, जो बहुत लोग में से आप लोगों में से बहुत लोग बिल्कुल non-CLAT वाले exams भी दे ही रहे होंगे, right? So we definitely have some of those courses, like whether it is the BHU, Jamia, etc., वो courses का भी हम definitely enrollment
abhi bhi still going on. So do join us for that. If you're in the giving the paper next year or the next year, we have the comprehensive batches for 2022 as well as for 2023, which is going on as well. Now, what is, well, I mean, a lot of people have started calling me Dev D. So I thought I'll stick to that terminology. What is Debajyoti Das's plan for these three-step process in terms of how to approach, right? How to approach passage-based questions. Let me take a quick look at the chat box. क्लास कब स्टार्ट होगी? तूबा क्लास तो स्टार्ट हो गई है. You probably need to refresh your page. I'm not sure. Stalin says Hitler was saying hi to you. Hitler and I actually, believe it or not, Hitler and I actually share a birthday. That's a deep amount of misfortune in my life. But ठीक है तो ऐसा ही है. Okay. Udhav, very good afternoon. Udbhav, sorry. Udbhav, very good afternoon to you. Hope you're doing well. Om, very good afternoon to you as well. उद्भव, सॉरी मैंने आपका मैसेज मिस कर दिया था. सर, डू यू थिंक 12th विल गेट कैंसल्ड? वेल, कैंसल्ड तो अनलाइकली है. आई बिलीव देयर इज ऑब्वियसली अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ पोस्टपोन मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता है. वील हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट फॉर श्योर. ओके, हरी कौशल, very good afternoon to you as well. Hari has a question. I got 97 in the sample mock. Is it good? I would think so. Anything above 85, 90 is a good and decent score, and I think you're on the right track. I think you should try pushing towards getting the, or trying to get the topmost ranks, and so on. Okay. Adolf Hitler. अरे आज मेरा बर्थडे थोड़ी है. April 20 was my birthday, and I think Adolf Hitler unfortunately also shares the series. Yes sir, अब start हो गया मेरे फोन पे. ठीक है, perfect. Tuba, then that's fine. Hari Krishna, Sandeep, very good afternoon to you as well. Okay, now चलो अब हम लोग देखते हैं what is this topic that I wanted to discuss. How should you go about in terms of passage based questions? Now, what most people I think are used to doing, what most people actually end up doing is they start looking at the passage from day one, right? Start looking at the passage from the word go, और वो पैसेज को जितना डिटेल में हो सके, जितना अटेंशन के साथ हो सके, right? They start reading the passage. Now, I personally don't think that you should be reading the passage in detail जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं. When you're reading the passage for the first time, don't read it in detail, right? Don't read it in detail. The plan should be, right, and it will of course take practice, right? एक बार में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, but once you do like dozens and dozens of mocks, each mock में you're doing like 4-5 passages, etc. Once you get into this habit, right, once you get into this habit, ये problem आपका definitely solve हो जाएगा, right? Now what I mean to say is, what you should be doing is, जब आप पहली बार पैसेज को पढ़ रहे हैं, right, जब आप पहली बार पैसेज को पढ़ रहे हैं, do it only for the bullet points, right? I want latest video of 2022 aspirants, please come over, not 2021. Well, I mean ये पैसेज का अप्रोच तो सब एग्जाम के लिए सेम ही है ना, चाहे इस साल दो या अगले साल दो, right? In fact, अगले साल दे रहे हो तो you have more time to be able to practice this method, right? To practice this method. So the method is, जब आप पहली बार पैसेज को पढ़ें, right, when you're reading the passage for the first time, try to go through it just very very quickly, right? चुटकी बजाने में 30 seconds में, 45 seconds में, maximum 1-1.5 मिनट में भी हो, वो पैसेज को निपटा के खत्म करो, right? जितना जल्दी हो सके. अब जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, what are you really looking for in the passage
is nothing in detail. What you are looking for is only the bullet points. कि paragraph 1 में मान लो let's say the passage is about the Israel-Palestine conflict, like right now. अब paragraph 1 में अगर हमास के बारे में बात हो रही है, right? पैराग्राफ 2 में मान लो गाजा स्ट्रिप के बारे में बात हो रही है, वेस्ट बैंक के बारे में बात हो रही है, पैराग्राफ 3 में इजरायली डिफेंस फोर्स का रिटेलिएशन के बारे में बात हो रही है, पैराग्राफ 5 में मान लो रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में बात हो रही है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अल-अक्सा मॉस्क फॉर द मुस्लिम्स, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेलिंग वॉल एंड इब्राहिम एंड आइजैक एंड सो ऑन, ज्यूज में क्या रिलेवेंस है, जेरूसलम का रेलेवेंस क्रिश्चियनिटी में क्या है, सुल्तान सलाहुद्दीन ने रोमन क्रूसेड्स को कैसे हराया, राइट? फॉर ईच ऑफ दीज, राइट, फॉर ईच ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, फॉर ईच ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वो अलग अलग पैसेज में द फोकस वुड बी डिफरेंट, राइट, द फोकस वुड बी डिफरेंट. What I want to point out is कि जब आप पहली बार पैसेज को पढ़ रहे हैं, right, don't look for details, बस अपने माइंड में बुलेट पॉइंट्स बनाते रहिए, right, बस अपने माइंड में बुलेट पॉइंट्स बनाते रहिए कि इस वाले में ये चीज है, इस वाले में ये चीज है, इस वाले में ये चीज है, that's it. Then what I suggest, right, then what I suggest is फन टाइम इज अ बिग फैन ऑफ मी, मैं भी फन टाइम का बहुत बड़ा फैन हूं वैसे, जस्ट यू नो ऑल द पन इंटेंडेड. So when you go to the questions, right, now when you go to the questions, then what you need to start doing is अपने माइंड में, क्योंकि आपने बुलेट पॉइंट्स बनाया हुआ है, राइट, अब आपने क्वेश्चन देखा कि अच्छा द क्वेश्चन इज अबाउट religious significance of the Al-Aqsa Mosque or the Temple Mount or the Wailing Wall या जो भी है. अब religion and religious background के बारे में paragraph 5 में बात हो रही थी, right? Now because you have read that passage in the first shot, this time you go directly to paragraph 5 क्योंकि you need to remember, right, and that's the whole point of step 1. स्टेप 1 में आपने पैसेजेस पढ़े, मेंटली बुलेट पॉइंट्स बनाए, राइट, एंड देन व्हेन यू फाइनली रीड द क्वेश्चन you'd immediately go to paragraph number 5. This time when you're reading paragraph number 5, what you need to ensure is this time you are reading it in a lot more detail, right? This time you're reading it in a lot more detail. So this time you're looking at absolute, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आप ध्यान से देख रहे हैं कि एग्जैक्टली अल-अक्सा मॉस्क में क्या हुआ था. बाय द वे चैट में there are about 40 people watching, so can you guys tell me what is the significance of the Al-Aqsa Mosque in Islam? अभी इतना न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहे हैं, आप लोग सब न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे होंगे. what is the significance of the Al-Aqsa Mosque in the religion of Islam? ये मेरा एक क्वेश्चन है एंड आई होप कि चैट बॉक्स में काफी सारे लोग मुझे इसका आंसर बता पाएंगे, राइट? ओके, while I'm waiting for the answer, राइट? सो पहली बार में आपने मेंटल बुलेट्स पॉइंट्स बनाए, सेकेंड स्टेप में आपने क्वेश्चंस देखा, क्वेश्चन देखने के बाद बिकॉज यू नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, this time when you go back to the passage, right, this time when you go back to the passage, this time you're looking at things in a lot more detail, right? When you're looking at it in a lot more detail, that's when you ultimately then go back and simply answer the question. Simply answer the question, right? So simply answer the question in the sense क्योंकि आपको वहां पर एग्जैक्ट चीज वो मिल गई, राइट? थर्ड होली प्लेस बहुत सारे लोग बता रहे हैं, which is fine, but why is it the third holiest? Like Makkah is the holiest, Medina is the second holiest, okay fine, and a lot of you are saying Al-Aqsa Mosque is the third holiest. हाँ, but क्यों है third holiest?
ये मेरा क्वेश्चन था. होली प्लेस है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों? In Islam, the term Al-Aqsa Mosque refers to the entire noble sanctuary. The mosque is believed to be the second house of prayer, considered of the Masjid Al-Haram in Makkah. Okay, so that's fine. सर आप पैलेस्टाइन और इसराइल पर भी वीडियो बना दीजिए. वाह, ये भी सही सजेशन है तूबा. I'll try to do that. It's not the third, it's the second. Well, I mean, it's generally considered to be the third for sure, but in any case. Okay, Devaj, the Prophet Muhammad ascended, peace be upon him, right? Ascended to heaven from there. Okay, so that's it. So came in as flying white horse, right? Prophet, the holy prophet, came in the flying white horse, and that is the place from which the prophet ultimately ascended to heaven, and that's why. So similarly, Wailing Wall का क्या significance है for Jews, या Jerusalem का क्या significance है for Christians? ये भी जनरली पता होना चाहिए. चलो एक मैं बता देता हूँ, क्रिश्चियंस का मैं बता देता हूँ, एक आपने बताया, एक मैं बता देता हूँ, एक हम होमवर्क के लिए रखते हैं कि आप लोग कल इसी टाइम जब हम लोग मिलेंगे विद अनदर सेशन, राइट, यू कैन ऑफ कोर्स टेल मी द significance for the Jews. For the Christians, I'll tell you, Jerusalem of course is the place, right, where Jesus Christ himself was crucified. Right, crucifixion of Christ happened in Jerusalem, and the resurrection of Christ also, right, also happened in Jerusalem. So there is of course a lot of religious significance for Jerusalem also in terms of Christianity, तीनों Abrahamic religions के लिए basically, right. तो Jews का वेलिंग वॉल का क्या सिग्निफिकेंस है, टेम्पल माउंट का क्या सिग्निफिकेंस है, द सेम कंपाउंड जहां पर अल-अक्सा मॉस्क है, वो ज्यूज के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप लोग मुझे कल बताएंगे, राइट. ओके, एनीवे सो लाइक आई सेड, स्टेप 1 इजराइल पैलेस्टाइन का पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया, राइट. ये जीके में भी आप सेम सिस्टम फॉलो कर सकते हैं. पूरा पैसेज पढ़ लिया, पैराग्राफ 1 में क्या है आपको मेंटली एक आइडिया हो गया, पैराग्राफ 2 में क्या है, पैराग्राफ 3 में क्या है, फिर आप क्वेश्चंस पे गए, राइट. व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू विल रियलाइज किस बारे में पूछा जा रहा है. सो अगर क्रिश्चियनिटी है इसके बारे में पूछा जा रहा है, देन यू नो कौन से पैराग्राफ में ढूंढना है. सो द मेन एफर्ट, राइट, दिस इज if you want to maximize your speed in terms of how fast you're able to solve these questions and so on, the best way is to keep practicing more and more. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, the more used to, right, the more used to you will become, right, you will become more and more used to be able to make those bullet points. फिर आपका प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व होगा. the problem, the real problem बेसिकली इज कि अगर आप पहली बार में पूरा पैसेज डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज सिंपली डबल एफर्ट हो जाता है. डबल एफर्ट क्यों हो जाता है? बिकॉज नंबर 1, आप जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे, पूरा पैसेज एक बार में याद होगा नहीं, राइट. देयर इज नो वे यू कैन रिमेंबर द होल पैसेज इन वन शॉट. सो इनएविटेबली जो स्टेप 3 में बता रहा हूं, गो बैक टू द पैसेज विद अ डिटेल्ड अप्रोच, कि इस बार पूरा डिटेल में पढ़ूंगा. वो पहली बार में करेंगे तो भी आपको फिर से देखना पड़ेगा. सो रादर देन वेस्टिंग दैट, डुप्लीकेटिंग दैट एफर्ट, वेस्टिंग दैट एफर्ट, पहली बार में सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाइए, क्वेश्चन देखिए, कौन से पैराग्राफ में आंसर है वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आदत पड़ जाएगी. व्हेन यू आर एबल टू डू इट very very fast, then go to that passage directly, look at that passage in as much detail, answer the question, get your marks and book your tickets to Bangalore, right. Okay, so okay, Anas has a question. Because our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam offered salah along with 150,000 other prophets when he was going to Miraj to meet Allah himself. So that happened. So I'm not denying that, but Al-Aqsa Mosque specific significance is that's the ascension. That is the particular place of ascension. What you've said is also correct, right? But the biggest significance is because Prophet Muhammad ascended to heaven in that particular place. Okay. Great. Can you make a video on Russia-Ukraine conflict? Okay, that's the Crimea crisis.
हिटलर को क्रीमिया क्राइसिस में इंटरेस्ट है, which is not very surprising. Which is not very surprising that Hitler is interested in the Crimea crisis between Ukraine and the Russian Union. But I'm sure somebody at gradeup is noting this down. We'll try to do a session for sure on that. That's the Crimea crisis. Okay. So what do you do if legal passages sometimes go out of context and use principles not used in the paragraph but are correct? But I mean, if the principle is given to you, then you obviously have to do it, right? But if the principle is not given to you, you don't go beyond the principle and answer the question, right? Okay, Anas, I read your answer for sure. We will plan. Okay, तो यहाँ पे assurance क्रीमिया क्राइसिस के लिए ऑलरेडी आ चुका है. I also want to go there. बहुत सही है सर. हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए क्या एंड देन पैराग्राफ? नो, स्टेप 1 बताया तो. स्टेप 1 पहला स्टेप है, आपको बिल्कुल एक बार पैसेज पढ़ना चाहिए, राइट? स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1, राइट? Read it with the intention that you are simply making bullet points. Okay, that is knowing which paragraph has what information. Okay, so that's what you will do, right? उसके बाद आप questions पे देंगे, right? This is step 2. Step 2 is read the questions, right? And once you have read the question, then you go back to the passage, right? And you know कौन से paragraph में कौन सी चीज है, अब तो आपको पता है पहले से. So the whole process becomes much faster. The whole process becomes much faster for you. That's the idea. Okay, so English book कौन सी best है CLAT के लिए? Well, I mean, there's a lot of books that you can refer. Grammar के लिए कुछ और है, reasoning के लिए कुछ और है. So it depends on what you're really looking for. First Qibla also, which we offer namaz in that direction. That's correct, but that's also Makkah. Namaz is technically offered in the direction of Makkah and the Kaaba, right? अब इंडिया से जेरूसलम जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में मक्का और काबा भी है. So that's a little that's why in India it won't practically make a difference. Okay, why quantitative technique is important? Well, I mean, because it is part of the syllabus. Priyanshi, ये कैसा क्वेश्चन था? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो डायरेक्टली उसमें से क्वेश्चंस आता ही है, सिलेबस में है, क्वेश्चन पेपर में है, जब क्वेश्चन आएगा तो इंपॉर्टेंट है ही. ओके, थैंक यू, ग्रेट अप. आई विल प्रॉमिस आई विल नॉट अटैक यू. बहुत सही सर. हाउ मेनी मिनट्स टू बी गिवन रीडिंग द पैसेज? आई थिंक यू शुड बी एबल टू रैप अप. जब पहली बार आप पैसेज पढ़ रहे हैं, राइट, जब पहली बार आप पैसेज पढ़ रहे हैं, आई थिंक यू शुड बी एबल टू फिनिश ऑफ द पैसेज इन 1.5 मैक्सिमम से 2 मिनट्स, राइट? उसके बाद क्वेश्चन देखिए, वापस पैसेज पे जाइए, वो आप करने चाहिए अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स और 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, राइट? तो पहली बार में बेसिकली शुरू में व्हेन यू विल मेक दिस हैबिट, नो, कि बस बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं, तो पहली बार में थोड़ा स्लो लगेगा. But the more you practice, the faster you will become. So when I do it myself, if I am doing it, I will normally finish off making bullet points in about 45 seconds. Less than 1 minute में मेरा तो खत्म हो ही जाता है. फिर वापस आके पढ़ूंगा. अब इस बार मेरे पास ज्यादा टाइम है, मुझे पता है कहाँ पे ढूंढना है, कहाँ पे टारगेट करना है, किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर मिलेगा, right? So now it's just easier to search because I already have an overview and a roadmap kind of a thing for the passage. राइट सर, ये क्रिटिकल रीजनिंग में भी कर सकते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बिकॉज, बट कर तो सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जीके और लीगल में तो 100% कर सकते हैं. इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश में भी कर ही सकते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग में अगेन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज्यादा लगेगा, बट यू कैन फॉलो दिस पैटर्न, यू कैन फॉलो दिस अप्रोच, these 3 steps. Passage जल्दी bullet points, question, back to the passage, looking for the exact place जहां पर हमारा ये information actual में available है. So that's how I would look at it also. Okay, so that's pretty much what I wanted to talk to you. आप लोग इसमें practice करिए. We will come back and sort of have a discussion
on how it is working out for you guys, right? I would love to hear a little bit of feedback from all of you कि ये method आपको कितना helpful हुआ, right? Is it actually improving sort of your speed or not? And those kind of things are just going to be valuable feedback, for me as well. So do stay tuned in. Do drop us a message here on the channel itself, right? I'll keep checking it in the days ahead of you. Do feel free to contact us on any of these numbers, and thank you very, very much. Have a lovely, lovely afternoon. I had a few Lucknow में तो मौसम भी काफी अच्छा है, but if you're on the west coast, then you're probably facing some problems, right? Okay, guys, thank you very much.